Hello and welcome to Amrita Raichand Chef and Beyond. Well, ये साल का आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते में मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ which is very close to my heart. ये रेसिपी मैंने मम्मी का मैजिक में बनाई थी मेरी मम्मी के साथ because this is my mother's signature dish. Today I am going to be making bread pudding but with an added twist of strawberries. So let's begin with the strawberries. इसके स्टेम्स को निकाल के इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे. अब बाकी का सारा काम होगा इस बोल में एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस रेसिपी. इतनी इजी है लेकिन जब मम्मा इसे बनाते थे ना तो लिटरली हमारे घर में जंग होता था कि किसको कितना मिलने वाला है. तो अब इस बोल में हम सबसे पहले डालेंगे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड जिसे आप बस रफली तोड़ के डाल दीजिए. मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ किया है पर मम्मी always used to use white bread. I like the little seeds on the side so that also adds a little bit of health. Alright, lovely. तो ये ब्रेड के स्लाइसेस इसमें आ गए. अब इसमें मैं डालूंगी शुगर, 2 egg yolks but whites are also going to be used and I will show you how. मैं इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालने वाली हूँ, some vanilla essence. अब ये जो मैं इसमें मलाई यूज़ कर रही हूँ ये घर की मलाई है. दूध के ऊपर जो लेयर बन जाता है मलाई का वो. Now my mother used to insist on this malai. Of course you can use regular fresh cream also but इसका जो वो homey feel, that yummy mouth feel जो आता है ना, that is something you cannot replace. So let's add 2 generous spoons of that. And now to bring this all together, some whole milk. Now with the help of an egg beater, इसे बस just for a few seconds whisk करना है. आप एक regular whisk से भी कर सकते हैं. So let's do that. That's it. तो the reason कि इसे बहुत थोड़े seconds के लिए करना है is because you don't want the bread to completely disintegrate. Alright? अब इसमें हम थोड़े से chopped nuts डालेंगे. You can add nuts of your choice. Alright, अब इसमें जो मेरा twist है, cut strawberries. After all, strawberries का season है, तो we should use them, right? Now just gently fold them in. Ah, look at this. How beautiful is this looking? That's it. The prep work is done. Alright, now all we have to do is pour it in a baking dish and bake it. So now I'm going to pour this. तो मैंने अवन को पहले से ही प्रीहीट करके रखा है at about 180 degrees. Look at how beautiful this is looking, है ना? सारे strawberries, breads और nuts, they all have come together so wonderfully. एक रीज़न है जिसके वजह से इसे mom's pudding कहते हैं और इसमें अभी बहुत तिकड़म बाकी है. So wait for that. But for the moment, let's get this baking. Right. Look at how beautiful this is looking. लेकिन ये और भी सुंदर लगेंगे just in a few seconds. So here I have some egg white जिसे मैं beat कर लूँगी. So let's do that now. The moment these bubbles are formed, इसमें we are going to add about a tablespoon of powdered sugar and beat this again. Look at these stiff peaks. जैसे ये पीक ऐसे बन जाए कि it stays in its own position, that's your cue for it being done. अब आप अगर पुरानी वीडियो देखेंगे जिसमें मेरी मम्मी ने एक्चुअली मेरे साथ ये रेसिपी बनाई है, she is so cute in it and very sweetly she said, now we can make 2 types of flour, one with the spoon. तो अब add one like this, one with the fork like she does it. Now we are going to put this back in the oven for no more than 30 seconds to maximum 1 minute. Basically हल्का सा इसका जो top है वो golden हो जाना चाहिए. And that's about that. Let's do it. Ta-da! Look at this, mom's pudding is ready.
और देखिए कितने प्यारे ये गोल्डन टॉप्स हो गए हैं. एंड क्या होता है ना, वंस यू कुक इट अ लिटिल दे बिकम नाइस एंड स्ट्रेची एंड इट्स यमी. अंदर से gooey pudding, ऊपर से दैट नाइस स्ट्रेची meringue. कैन यू आस्क फॉर मोर? Not at all. तो बनाइए इस रेसिपी को and end the year on a happy, sweet note. But don't forget to subscribe to Amrita Raichand, Chef and Beyond. तो मिलते हैं अगले साल with lots more exciting recipes and a lot more magic. Happy New Year, everyone. Wishing you all the very best.